Visible, right? Yes. Okay. Yes, So yeah, let me introduce firstly myself, like those who don't know. And I think the like from the different colleges, the people enrolled from the IITs, from the NIT, from the tier two, tier three colleges also. So I think the mostly people from the pre-final year, right? They will be appearing in the this year for the placements, right? Yeah, you can do thumbs up so I can get a small idea. Okay. Okay, so yeah, this Sony from NIT Warangal. Recently, I completed my masters in mathematics and computing, and I also got campus placement in ICIC Bank as a data science, data analyst, and data scientist. Okay, so this is a brief intro, and yeah, okay. So yeah, let me start the main like session. So like yeah, so I started my preparation like from the my onwards last year. Okay, before like our placement generally started in the August, and for the masters companies are generally coming in the September's. Okay, so yeah, I'm assuming the your placement season will start from the August also, August itself. So yeah, this is the roadmap for the data analyst and the same for the data scientist. I include some more topics in the last of the PDF. Okay, so be stay there, and if you have any doubts, you can raise your hands and can unmute yourself and can ask. Okay, so my funda is like I have to give the clear idea for for the roadmap of the data analyst and data scientist, what thing you should follow, okay, and what thing you should not follow. So like I divided this roadmap in the four part. The four major concept is the you have to learn the code, then second you have to learn the concepts and the what tools you have to follow for the analysis, for the for the machine learning, okay, and what type of project we should have. Okay, we will talk each point like the what resume should we have, what types of what things we have to prepare before the interview, after the interview. Okay, we all will be covering. So like I think the how many of you don't know about the Python? Can you raise your hand or like can do a thumbs up? I think all people know Python. Hello, I think all are the aware from the Python, right? One people don't know about the Python. Who is it? Okay. So yeah, those who know like the basic idea, yeah, because it will be a basic session for now. Because those who one sec. Yeah, so those who know the some portion like Python SQL, please stay there. We will get the something new from this PDF, and I will be sharing this PDF only those who is stay at the last. Okay, don't think I will be sharing with all of you guys. Okay. So this is the roadmap. The first thing like you have to focus for the Python. If you know the basic of the Python, then okay, it is good. Like if you don't know, then these are the links I will be sharing. So these are the mostly from the Campus X. I have followed all the links. This is the very good playlist. Okay. Or like you can also follow from the Code with Harry, 100 days of Python. Okay. So like there is no like you have to follow this one only. This I am giving the like what like map you should follow. Okay, so you should start, you can those who didn't start it yet, you can start with the Python, which is the very basic language, and the estimated time I am assuming 2 weeks. Okay, then you should like know the basic Python. If you know, then you should know the OOPS concept. Okay, object oriented programming concept in Python you should know. Then you can like these from the advanced topic, the lots of question I asked like asked from the interviewer in my interview itself. Okay, like file handling, exception handling, regular exceptions. Okay, function. You should also know the like if you get idea about the basic Python OOPS program, then if you have time, then you should start the advanced topic also. Okay, before your interviews. Don't think you if interviewer asks, then I only prepare. Okay, like during the one sec. Like advanced topic, you can like okay, advanced topic you can leave for now if you just starting, okay, because you have to cover the lots of topics simultaneously. But those who know the Python very well, then you can start advanced topic also, okay. So these are the links for the practice questions. You if you open this link, it will be automatic open. Then
The second thing, we have to follow the Python library, okay, for the data analyst. Like all library like NumPy, Panda, data visualize for data visualization, we should know the Matplotlib, Seaborns. Okay, these are the links I follow, and mainly from the campus X only. It is good. Like I really like from the like Nitish is there for from campus X. The way of technique is like way of teaching is very nice. Okay, you also if you already followed something like other sources, like तुमने कुछ अलग से follow कर रखा है, तो आप उसी पे स्टक रहो। ऐसा नहीं कि मैंने बताया तो इन्हीं पे जाना है, ऐसा कुछ नहीं। ओके, और ये सारे फ्री सेशन है, कोई भी पेड सेशन नहीं एक भी। Okay, so but काफी अच्छा उन्होंने पढ़ाया। Then the second thing, after completing the libraries, you should know the what is GitHub. Okay, so these are the like time you should follow. Then only you can prepare within the 3 or 4 months. Okay, because the session will start from the August, and I'm assuming like those who will be preparing the this year placement season, so they know something basic. Okay, so it will not take too much time. And those who are like will joining the like from MTech or like for master or like BTech for second year, third year, they can follow time this time. Okay. Then SQL is very important for the data analyst. Mark my word. Okay. The every interview will ask the 80% question from the SQL only. Okay. So you should know the each and every concept of SQL, every like Windows function, everything you should know about the SQL. Okay. I think all of you aware about the SQL. Who don't know about SQL? Raise your hand. I think all of you know about. Yeah, you heard. I think the structure query language is the full form. Okay, but very important is like concept is for the analyst or for the data scientist also. I can say the SQL. The 80% of the like interview question will be from this concept only. Okay. Okay. Let it and after that we can follow the MongoDB, MySQL, Workbench. These are the like database tool. Okay, so you can learn one of these. Like if you already learn something like MySQL, then you can leave this one. Okay, these are the links of the playlist. And the Plotly and the Dash, these are the two more library you can leave for now. If you are like just beginner, you want to just secure yourself. Okay, then you can leave these things, Plotly and Dash. Extremely also you can leave if you are like have sufficient time or you already know the something from like Python, you know, SQL, you know, then you can explore these things also. Okay, don't go directly here. Okay, it will be take time and there is no profit. Okay, then concept. If I'm talking about the concept, what type of concept we need for the data analyst, data scientist. Okay, so you should know the statistics. Okay, every interview will ask. Every interview will ask about the statistics concept. Okay, so yeah, you should know the statistics. These are the playlists from the campus and some other sources also is there. Okay, so you should know like descriptive statistics, learn data analysis process, LDA, EDA. You should know. Okay, these are the like data set you can practice. Okay, pandas. You should know all these things. Then these are the like data set Titanic. These are famous data set. I am putting the link for your practice only. Okay, you should not like you don't have to find okay on YouTube. You will get directly from here also. Then you should know the advanced statistics also. Like every interview will ask about the statistics and SQL. These are the two major concepts for the analyst. If you practice, if you did master in this, definitely you will crack your first interview also. Okay. We will talk about the communication also. Okay, in this video will include that also. So advanced statistics, the covariance, these you can check. Okay, these link is contain all these things. Okay, if you already studied in your masters or in your graduation, then it is okay. But you should follow these playlist also if you can. Then you should know some probably basics also. Like probably I can say I failed some probably question in my ICIC interview itself. No, not ICIC interview, ICIC OT online exams. Okay. So there are lots of tough probability question in my online exams. In ICIC I'm talking. Okay. So if you know then only you can clear. Otherwise there is no chance. Like these are the some like major topic. Okay. There is no need for reading like okay distributions and all. Then the tools, what tools you have to follow. Okay. For Excel, you should know, I think. Okay. Like if you know the basic, it is okay. But Excel, the basic like pivot tables, dashboards, okay, macros and VB you can leave for now if you are beginner, just beginner. But Excel, you should follow the one.
Like you can follow these tutorial also, like which is mentioned here, and you can follow the one like 3 or 4 year session also in YouTube. You can find from the Edureka, from the other YouTube, any YouTuber. Okay, so you should know the Microsoft Excel. Yeah, let me tell you one thing. Like, yeah, let me ask one question from you guys. So yeah, anyone mute yourself and let me tell. What do you think about the this year session? Any idea? Like, how will be this year placement season? I am asking. Like, what do you think? Bhaiya, can I ask something? Yeah, sure, sure. Please. Bhaiya, how much DSA is required for the data science or data analyst post? The for the DSA or DSA, okay. DSA, I can say you can put in the very last, okay. Because I don't think for the analyst role, the company are giving CTC 8 to 12, 8 to 15. Those who coming like 30 LPA for the analyst, there are some company in Tier 1 colleges, okay. They are giving the 30 LPA, 32 LPA for the analyst itself, data scientist itself. They are asking the DSA with Python, okay. So if you are targeting that high company, high paying company, then you should know the each and everything. Okay. This is for the like 8 to 15, 8 to 16, 8 to 20. Okay. Yeah, you can assume like if they are paying the 30 LP for a data scientist or data analyst, and the average paying scale is in India is 8 LP. Okay, for the analyst role. If they are paying too much, like compared to average, then you should know the DSA also. They can give you a domain like data engineer. Like if they are assuming the data scientist should know the data engineer work, then they will ask the DSA and all this stuff. Okay. Otherwise, no company will ask the DSA for the analyst and for the scientist. Okay. I think you get your answer. Okay, Bhaiya, got it. Bhaiya, basically, I covered up the Python's beginners programming and the C programming language. Okay. After that, I conquered the SQL queries, but now I am confused to get the C++ with DSA course or the No, courses like. if you are targeting for the analyst role or data scientist or data engineer, you should go for the DSA with Python. Okay. The company will ask that one only. DSA with Python. You can get from the GFG, I think. They are very less course with DSA with Python, but you can get from the GFG, I think. Okay. Okay, Bhaiya, got it. Don't go for the C++, I think. Okay. It will not work for you. So, yeah, if you already know that one, like you covered something like, I think the 100% DSA is there, like you covered only 30 or 40%, then you can like do okay. That, but if you switch in the Python, now if you didn't start, okay, then you can, it will be better for you. So yeah, anyone you like no one tell the answer. Like how you are like what do you think about the placement season for this year, like for the 2025 batch pass out? Are you aware about this year placement season, right? Yes, Bhaiya. So yeah, like yeah, Python. I will prefer Python for the analyst role, but some company also like looking for Java developer and like this. What target you are aiming like this session for the data science and data analyst? So I will suggest you go for the Python only. Okay. So yeah, anyone like no one other tell like what do you think about? Are you aware about this year placement or not? Like anyone? Yes, Bhaiya. We heard about in this recession year, all IITs and NITs have low placement, but NIT Warangal has its peak. I Okay, yeah, think, NIT angle is for the master itself. By otherwise, like the in the all college the placement is very low. Okay, so let me tell you like some assumption for the next year. Okay, with some fact. So don't think this the next year for your batch like those who are graduating in 2025. Okay, so don't think the placement season will okay and fine. I think it is my personal assumptions, okay, and I can give some fact also. So the placement season will be tougher from this year. Why? Like the in the last the end of the season, this major the big companies are revoking the offer. Did you hear from the LinkedIn and some other your senior, right? Yeah. Yeah. So the major mostly companies are like the big companies, okay, like Sprinkler and there are some other companies also. They are revoking the offer.
the business situation is very tough nowadays. Okay, so the I am assuming the next year placement will be tougher. Honestly, I'm telling you, like you have to prepare very hard from day and night. If you are just starting in like in 2 or 3 months, okay. So you have to very if you want to secure a good job in the starting of your placement season, you have to prepare very hard. Okay, keep in your mind. Yeah, back to our point. So yeah, these are the tools. Okay, you should know the basic at least. Okay, for the campus placement, you should know basic. Okay, if you are trying for the off campus, you should know each and everything. Yeah, Tableau. These are the like visualization to Tableau or Power BI. I did Tableau. Okay, and no one tell you मतलब आपको कोई जज नहीं करेगा कि टेबलो आपने क्यों किया है या पावर बीआई क्यों आपने किया है। कंपनी अगर पावर बीआई पे काम कर रही है और आपने टेबलो लिखा है तो भी चलेगा आपको, इसलिए कोई रिजेक्ट नहीं करेगा इंटरव्यू में। ओके, नो वन रिजेक्ट यू फ्रॉम दीज लाइक दे रिक्वायर टेबलू एंड यू डिड पावर बीआई। ओके, ऐसे कोई रिजेक्ट नहीं करेगा, वो बोलेंगे लाइक आप ये कर लो। ओके, तो आप कोई भी एक टूल अपने मतलब टेबलू में प्रिपेयर करूंगा, वो काफी ज्यादा मतलब मैंने किया तो काफी मुझे अच्छा लगा। आप कर सकते हो, बाकी पावर भी यू कैन चेक आउट। सो दीज आर द सम प्रोजेक्ट्स। ओके, like these are the very old project. Okay, don't copy these things. These are not these will not going to help you. Okay, IPL dashboard everyone know. Okay, COVID. These are the some like samples. You can follow these formats and you can build your own projects on something new like which is happening on election. Okay, there are lots of trend topics. So now tell me the very honest things which like as a placement coordinator at NIT Warangal, I seen like the majority of people lacking in the communication only. The students are not able to like convey your thoughts, convey your like skills to the interviewer. Okay. So these are the very soft skill are very important. If you know the all the above things like you know the Python, you know the DSA, you know the SQL, you are the like very good at all the programming stuff. But you don't know like you have communication, but you don't have the good communication. Then there is no use of your knowledge. You if you are not able to convey to like interviewer to anyone who want to know from you. Okay, so these are the five things you should know for the analyst, like business analyst, data analyst, risk analyst, market, all these things are the very similar. Okay, like so they is no separate thing you have to study. You have to follow the communication. Okay, you have to work anyhow. Okay, if you know the better tool on YouTube, you have to follow that step for the communication. If you know some app application, you have to follow that. Otherwise, no use of all these things. Then you should know your analytical skill should be good, like otherwise you will not be able to crack your like OT online exams. Okay, for the analyst, the company generally asking aptitudes, reasonings, puzzles, guesstimates in the online test itself. Okay, so if you don't know, you will not be able to qualify initial first step. Okay, so you have to know the problem solving skill, storytelling for the interview. They can give some what I can say, yeah, they can give some picture or something like business problem. Okay, you have to explain how can you solve, how can you your skill help, how can you help in their company. Okay, so you know these five concepts very know. These are very important things. The student what they are doing, they know the all the programming stuff and all these things. Okay, but they don't they are not able to explain very well in the like business understanding. Okay, so I think did you get my points? Yes, Bhaiya, but as a mathematics or pure student, we can't get any enough environment to get the business studies. So Yeah, how can okay, let me tell you. It will be complete. Okay, let me tell you the further things. Okay, so these are the things and the resources to work on the soft skills, like the five skill I told. Okay, like you should know the communication, like communication is should be good, analytical, problem and storytelling. So these are the resources you can follow. like जैसे लाइक आप blog पढ़ो, डाटा साइंस के हो गए या कुछ न्यूज पढ़ो। ओके, तो आपको पता होना चाहिए कैसे चल रहा है। जैसे अभी एआई बहुत चल रहा है, जेनेटिक एआई हो गया, तो कैसे काम कर रहा है थोड़ा मतलब थोड़ा ऐसा नहीं है कि आपका बिजनेस एनालिस्ट के लिए आपको हायर कर रहे हैं, कंपनी आर हायरिंग फॉर द एनालिस्ट रोल, दे कैन आस्क फ्रॉम द एआई इटसेल्फ, दे कैन आस्क फ्रॉम द मशीन लर्निंग इटसेल्फ। ओके, हाँ, okay, I will be including the machine learning also. Okay, waits for some time. So the resources you can read from this, you should follow the some blogs, some articles, you should watch the some broadcast. Okay, interviews or like आप एक्सपीरियंस उनके जो कोई भी कंपनी आ रही है
So you should go on YouTube and search interview experience, search on Glassdoor. There are lots of platform. You can approach their senior also, those who are already working in particular role, particular company. You can approach to LinkedIn, I think. Okay, it is very simple nowadays. So you should ask what type of interview will be. Okay, before I did these things, like मैंने मतलब 5 कंपनी से मैं रिजेक्ट हुआ होऊंगा, छठी या सातवीं कंपनी में ली थी ICICI। मैंने सारी कंपनी में ऐसे ही किया, लाइक पहले उनका पूरा बायोडाटा जो भी है उनका पढ़ा, क्या रोल है क्या है। ओके, सो ऐसे आपको पढ़ना होता है, वरना आपको पता नहीं चलेगा इंटरव्यू को क्या रिक्वायरमेंट है आपसे। Okay, like everyone know these things. These are the free things that everyone can study in 3, 4, 5 months. So there are lots of people doing the same thing, but you should like know something different, something other than other applicants. Okay, then only you will be qualified. Did you get my points? Hello. Yes, bhai. Yeah. So like for the data science, I can say if you know all this like Python, SQL and all I mentioned, the statistics, very major thing, then you can include the machine learning and deep learning. These are the two major concepts for the data science. They are looking as a fresher. Okay. This is roadmap for the fresher, not for the like expense one. If there is someone in the meeting is expense one, they can leave here. Okay. I am also fresher. So, so the machine learning and the deep learning, they can study from the campus itself, or they can also search for the Krish Naik is also there for the data science courses. So this is the Krish Naik is also one of the best educator on YouTube. They can follow from there also. Okay, did you get my point in the machine learning and deep learning? And those who are preparing for the analyst also, Yes, yeah, they should know the machine learning concept, okay? Because you have to build some machine learning project also. So you should know the basic of machine learning behind machine like mathematics behind machine learning, okay? भाई दीपक भाई क्या करोगे वहाँ पे? Okay, so you should know the basic mathematics behind machine learning. They can ask the some, they can relate the machine learning and statistics. Okay, because the with the help of statistics can only build the machine learning algorithm. So you should know the way behind mathematics behind the machine learning. Okay, if you are even preparing for the analyst only. Okay, मतलब बहुत सी कंपनी आपको पूछेगी मशीन लर्निंग आता है क्या, तो आपको आनी चाहिए, वरना वो आपको हायर करने के चांसेस कम हो जाएंगे। बट डीप लर्निंग कोई नहीं पूछेगा आपको अगर आप एनालिस्ट के लिए स्टक हो। ओके, अगर तुम डाटा और मैं एक बता देता हूँ, अगर आप कैंपस हायर हो लाइक जैसे Tier 1 कॉलेज है, IIT NIT से, तो आपको डाटा साइंस के लिए कम अपॉर्चुनिटी मिलेगी कंपेयर टू एनालिस्ट रोल। ओके, डाटा साइंस का थोड़ा पैकेज जो है हाई हो जाता है, तो वो इनिशियली फ्रेशर को हायर नहीं करती, वो उन्हीं को अपने एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय को प्रमोट करती है। ओके, ये ऑल कॉलेज के लिए नहीं, बट कुछ कॉलेज में कम अपॉर्चुनिटी रहती है डाटा साइंस के लिए। तो आप एनालिस्ट के लिए तो आपको प्रिपेयर करना ही है, आप अगर डीप लर्निंग करने कर पा रहे हो देन आप कर सकते हो। ओके, वरना एनालिस्ट के लिए आप जाओ। देन यार रिज्यूमे यार सबसे मेजर थिंग है, अगर आपका मतलब सारे कंपनी जनरली रिज्यूमे शॉर्टलिस्टिंग रखती है। ओके, तो रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट नहीं होगा तो आप भूल जाओगे आप कभी इंटरव्यू भी दोगे। ओके, तो आपका रिज्यूमे यार मतलब ऐसा है, कोई भी फिक्स रिज्यूमे नहीं है, जैसे मैंने लिखा दे नथिंग परफेक्ट रिज्यूमे। ओके, सो मतलब कैसे भी आप जैसे आपको जो कमी लग रही है कंपनी में नहीं हुआ तो उसका रीजन पता होना चाहिए क्यों नहीं हुआ, उसके जॉब रिक्वायरमेंट क्या थी और मेरे पास क्या था। ओके, तो ये आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए, यू शुड हैव सम आइडिया लाइक व्हाट दे आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम अस एंड व्हाट दे वी हैव। तो ऐसा कुछ नहीं है कि परफेक्ट है, बट आपका एटीएस फ्रेंडली होना चाहिए। देयर इज एप्लीकेशन ओके एटीएस, यू शुड नो लाइक बिफोर अप्लाइंग फॉर एनी कंपनी और इवन फॉर द कैंपस आल्सो यू शुड नो द एटीएस स्कोर। ओके, तो मतलब वो काफी ज्यादा चांसेस हो जाएंगे आपके शॉर्टलिस्ट होने के। बाकी अच्छे प्रोजेक्ट होंगे तो डेफिनेटली विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर द लाइक ऑनलाइन एग्जाम और फॉर द इंटरव्यू। So these are the some tips for the resume preparation. I will be having some another session if you guys interested for the resume and interview preparation. Okay. तो like इंटरव्यू प्रिपरेशन का क्या, वन सेकंड। सो या इंटरव्यू प्रिपरेशन का तो जैसे मैंने आपको लाइक आई ऑलरेडी टोल्ड यू, लाइक गिविंग इंटरव्यू आल्सो लाइक मतलब आपको ग्लास डोर हो गया, लिंक्डइन पे हो गया, आप अप्रोच करो अपने सीनियर को और जो भी कंपनी की रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप प्रिपेयर करो। ओके, लाइक लास्ट डे में आप ऐसे मत करो कि आप बैठ के यार पाइथन को रिवाइज कर रहे हो, लाइक व्हाट आर द एडवांस टॉपिक्स, व्हाट आर द मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स। ओके, you should have your short notes if you are aiming some good placement in your campus. Okay, if you are just like यार जॉब तो लग जाएगी क्या है, तो वो एटीट्यूड है तो आप भले कुछ भी करो। ओके, वो लग जाएगी, लगनी होगी तो। लाइक इफ यू आर वेरी सीरियस देन यू शुड लाइक फॉलो ये प्रॉपर स्टेप्स। ओके, लाइक कोई भी इंटरव्यू हो रहा है तो आप ये नहीं करो कि यार मशीन लर्निंग को पूरा रिवाइज कर रहे हो। मैंने भी एक दो
मतलब कंपनीज के लिए ऐसा किया था, बट इवन दे आर आस्किंग एसक्यूएल ओनली। तो फिर भी मैं मशीन लर्निंग पढ़ रहा था। ये कुछ मिस्टेक्स है, मेरे एक्सपीरियंस है, तो आपको हेल्प होगी। तो आपके पास शॉर्ट नोट्स होने चाहिए और हर चीज के आपके पास नोट्स होने चाहिए, ओके। तो वो आपको इंटरव्यू से पहले अगर एक दिन या जो भी कम टाइम मिलता है, जैसे कैंपस से अगर इंटरव्यू है तो आपका कैंपस प्लेसमेंट से, तो बट अगर आप ऑफ कैंपस है तो आपको प्रॉपर टाइम मिल जाता है, वो कंपनी टू कंपनी वेरी करेगा। एंड तो आपको मतलब कंक्लूजन ये है कि आपके पास वहां से आप थोड़ा आइडिया ले सकते हो, ओके, कैसे क्या रहने वाला है, तो वहां से थोड़ा हेल्प होता है। सो या दीज आर द थिंग्स, ओके। Now, how is the like information? Anyone tell me? Anyone can tell me? हेलो, लाइक सेशन कैसा रहा यार? बढ़िया लगा भैया। लाइक ये मैं आपके साथ ही शेयर करूंगा, क्योंकि लाइक ऑलरेडी आई थिंक मोर देन 95 people enrolled, okay, but I if I give the all information in the like already session is free of course, even they are not like attending, just yeah, some of may be busy in some work, but I don't think the 40% will be busy or 70% will be busy, okay. Well, the people are not serious, okay. So I don't want to share this information with like everyone. Okay. Yeah, even I recorded this session. If the majority people ask with some reason, then already I will share with those guys. Okay. So, कैसा रहा सेशन? आप म्यूट करके अनम्यूट करके मुझे बता सकते हो लाइक, और कौन कौन सी कॉलेजेस से हो तुम? हेलो। That's good, भैया. Okay. So yeah, from which college are you? Achieve success. Actually, भैया, I haven't get any college till now. Right? I am waiting for that. Okay. Okay. Yeah. Very nice. Okay. Yeah. Very nice. Very helpful session. Okay. So like भैया, that's I have a question. yeah, what are you Can saying? can we manage both net exam preparation along with data analyst course? What is your like what I can say? What is your background? Like what you did earlier? Hello. भैया, please repeat your question. I या haven't मैं कह रहा हूँ listened what आपने you asked. आपने 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 क्या किया ग्रेजुएशन में, लाइक क्या पढ़ा है? भैया, recently I have cleared JAM exam and now take participate in JAM counseling. Okay, okay, Waiting okay. for the I got college. you. Okay, okay, okay. So the thing is like you should not follow the net exam and the data analyst. Okay, because I already told the this year the next day will be the research. Okay, very huge research. You will get the idea. Like if you want to crack any job, then you should be very good at your skill, okay. Keep my things in your mind, like you can follow the net after your like last semester. If you are not able to crack, if you are not interested in these things, okay, then you can go for the CSR net. Okay, what is your rank? I have multiple things, भैया. That's why I am asking that whether can I manage both No, no, the you things should at not the manage. same Yeah, time. if you can, then you should know. Okay. Yeah, I already I seen many people, they are doing some like CSR, so they are very confused. Like, they don't know what they have to do in your life. Like they are targeting placement also, they are targeting PhD also, they are also doing some nonsense stuff also. Okay, so it will be very problem for you because the research and main reason is research. Okay, you should be very good at your skill. Then only you can qualify any job interview. Okay, so if you are targeting, you should target any one of like CSR net or PhD or campus placement. Okay. Yeah, I'm not telling you you should not study anything. You should study your like if you are enrolled in the pure mathematics something, you should study your subject set. like मतलब काफी अच्छे से आप उनको पढ़ो। बट अगर कैंपस प्लेसमेंट के लिए अगर जाना चाह रहे हो तो इनको काफी अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। तो सीएसआर नेट की प्रिपरेशन के साथ मैनेज करना बहुत मुश्किल है, ओके। क्योंकि कहीं ना कहीं आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे होंगे, ओके, तो वो नहीं करना है। Okay, भैया. Thank you. या एनीवन एल्स? या ओम प्लीज आस्क। It was a good session, Bhaiya. या थैंक्स ब्रो। Yeah, guys, you can follow like for like on my YouTube. Yeah, I forget to share. So you can follow these links. I will be sharing in group itself. Like what I am doing.
in the upcoming days. I already took some like stocks है मतलब लाइक मैंने पहले भी बहुत से सेशन ले रखे हैं बहुत से स्टूडेंट के साथ जिन्होंने काफी स्ट्रगल करके जॉब अचीव करी है, तो आप मेरे यूट्यूब पे वो चेकआउट कर सकते हो। ओके, तो जो लेट ज्वाइन कर रहे हैं उनको कुछ समझ में नहीं आएगा। ओके, तो आप वो सुनो मेरी बातें। तो जो लोग मतलब अभी जो सेशन लाइक क्या आई फॉरगेट है, मतलब मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पे बहुत सारा कंटेंट डाला है, बट अपकमिंग डेज में मैं प्योरली डाटा एनालिस्ट डाटा साइंस पे फोकस रहूंगा। जो भी मेरे एक्सपीरियंस रहेंगे, जो भी मैं आईसीआईसी बैंक में सीख रहा हूँ, मैं डेली ट्राई करूंगा कि आपको कुछ ना कुछ सिखाता रहूँ, कुछ ना कुछ करता रहूँ। तो आपको बस ये ध्यान रखना, आप फॉलो करो, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप शेयर भी करो उसको, ताकि यार मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिले। ओके, बाकी तो कोई दिक्कत है नहीं, लाइफ में चल रहा है। ओके, और बाकी मतलब मैं भी आज तुम्हें कुछ चिप टिप्स शेयर करूंगा कि इवन तुम मतलब जैसे मैं 5 कंपनी में रिजेक्ट हुआ। ओके, तो मुझे भी बहुत सा, और आपको लगेगा आपकी लाइफ में कि आज जिसको नहीं आता था उसका भी हो गया, तो कुछ लक नाम की चीज होती है लाइफ में जो मैटर करती है। तो उसके भरोसे हमें नहीं रहना है, हमें अपनी जो भी आपकी मिस्टेक्स रही है लास्ट इंटरव्यू में उसको इम्प्रूव करके करके आपको आगे बढ़ना है। ओके, डेफिनेटली वन डे लाइक मतलब आपका भी एक दिन आएगा। ओके, तो उसके लिए आप तैयार है ना, क्योंकि आपकी अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा सारी चीजें तो आप डेफिनेटली आपकी भी जॉब लगने वाली है। ओके, इफ यू आर टारगेटिंग एनी टेक कंपनी और एनी लाइक एड टेक और वट एवर, अगर तुमने पढ़ा होगा अच्छे से तो आपकी डेफिनेटली जॉब लगेगी। हाँ, ये सकता हो थोड़ी लेट लगे, आपने अच्छा पढ़ा फिर भी आपकी थोड़ी लेट लगे, तो वो अप्स एंड डाउन चलता है लाइफ में। ओके, तो मतलब रिग्रेट नहीं करना है लाइफ में। मेरा मतलब देखो मेरा थोड़ा मैं बता देता हूँ बेसिकली। मैं मतलब 10th से भी मतलब ब्रिलियंट आप तुम कह सकते हो, वैसे मैं मानता नहीं हूँ खुद को। लाइक परसेंटेज वाइज अगर तुम किसी को जज करते हो तो परसेंटेज मेरे हमेशा से काफी हाई रहे। बट आफ्टर लाइक इनरोलिंग इन द ग्रेजुएशन आई डिड माई ग्रेजुएशन फ्रॉम जेएनवी। ओके, एंड मतलब वहाँ पे इनरोल करने के बाद मेरे परसेंटेज वगैरह बहुत कम होते थे। ओके, लाइक जस्ट 70 समथिंग, जस्ट मतलब ठीक है, आइडियल है। तो ऐसा नहीं कि मेरे परसेंटेज क्यों गिर रहे हैं, क्योंकि अब मुझे यार अदर चीजें भी फोकस करनी है लाइफ में, जिससे बहुत से अदर स्टेप्स है, बिजनेस स्टेप्स है, और लाइक पढ़ाई पढ़ाई नहीं करनी। ओके, लाइक देयर लॉट्स ऑफ पीपल आर हैविंग 9.5 CGPA but they don't know like the basic things also. They also don't know how we can we approach someone. Okay, मतलब उनको कुछ पता नहीं होता लाइफ में, मैंने ऑब्जर्व किया मेजोरिटी पीपल, मैं नहीं कह रहा हूँ जिनकी 9.5 है तो वो सब ऐसे ही है डल, बट मैंने देखा है मेजोरिटी पीपल दे डोंट नो लाइक हाउ टू डील विद द टफ सिचुएशन। ओके, इफ द प्लेसमेंट सीजन इज नॉट गुड, लाइक मतलब उन्होंने काफी अच्छा पढ़ भी रखा होगा तभी उन्हें कॉन्फिडेंस नहीं है, तो कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप कुछ नहीं कर पाओगे लाइफ। ओके, तो अप्स एंड डाउन्स तो चलते रहेंगे, और ये ध्यान रखना दिस नेक्स्ट सेशन विल बी वेरी टफ। ओके, बिकॉज यार कंपनी बहुत ज्यादा मतलब ऑफर रिवोक कर रही है, तो मतलब सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब है। पहले तो जॉब दे नहीं रही थी और देने के बाद भी वापस ले रही है, तो समझ जाओ। ओके, तो यू हैव टू प्रिपेयर वेरी वेरी हार्ड if you want to crack in the upcoming months itself in the starting of our session. Okay, Yeah, okay. what should be a minimum CGPA should we maintain so that we can be Yeah, if you available are for like most if you are from tier 1 colleges, you should have the CGPA 7. Okay, if you have the 7 CGPA, then you are eligible the almost 80% companies, 80 to 85 companies. Okay, yeah, the CGPA is very important for the tier 1 people. Okay, like मतलब तुमने यार इतनी मेहनत करके लाइक जैम देके CSR मतलब जो भी आपने IIT जी देके, ओके, सम IIT people will be there। ओके, तो मतलब तो जो भी आपने मेहनत करके इतना कुछ किया है, 4 साल 2 साल आप पढ़ रहे हो, और अगर आपकी सीजीपीए नहीं है तो आपकी जॉब में बहुत ज्यादा ऑब्स्टेकल आएंगे। तो आप सीजीपीए को मेंटेन करो, अपने प्लेसमेंट के लिए भी पढ़ते रहो। सीजीपीए इज वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक 7 CGPA होनी चाहिए आपकी, तो आप 80% कंपनी में एलिजिबल हो। okay. ओके, तो ये सीन रहता है, सीजीपीए इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, एनी अदर क्वेश्चन? या एनीवन कैन आस्क एनी डाउट। ओके, या ओम प्लीज आस्क। How can we manage our placement preparation along with the academics? अकेडमिक देखो, अकेडमिक तो मतलब वो थोड़ा डिपेंड करेगा कॉलेज टू कॉलेज। तो उसका देखो पर्सनल मेरा तो ऐसा था, देखो यार मैं थोड़ा सा पर्सनल से चला जाता हूँ। मैं थोड़ा सा मतलब आलसी टाइप तुम कह सकते हो। मैं मतलब जो बंदे आलसी होते हैं वो थोड़ा अलग से सोचते हैं। ओके, बट मैं वो नहीं बता रहा तुम्हें, मेरा नहीं बताऊंगा। देखो अगर ऐसा है तुम मैनेज करो कि तुम्हारा सीजीपीए अगर अच्छे बन गए, इन केस यू आर लाइक तुम मास्टर्स करो, मतलब तुम क्या करना चाहते हो समझा नहीं मैं। मैनेज करना चाहते हो, ओके, Uh, मतलब तुम कोर्स कौन सा करोगे ये पूछ रहा हूँ। नहीं नहीं एक्चुअली अभी मैं एनरोल करूंगा कॉलेज में ठीक है फर्स्ट ईयर के लिए। फॉर द मास्टर तो और अब फॉर से द मेरा पीजी? टारगेट हाँ मास्टर के लिए MSc मैथमेटिक्स। ओके, ओके यार, ओके ओके गॉट इट। तो लाइक तुम्हारा जैसे 4 सेमेस्टर का कोर्स है, तुम फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर में अच्छे से मेहनत करके सीजीपीए को इंक्रीज रखो अपने। ओके,
लाइक तुम्हारी 8 सीजीपीए है, 8.5 सीजीपीए, देन मतलब तुम्हें अब ज्यादा फोकस नहीं करना अपने एकेडमिक्स में, ओके। साथ में तुम 2 साल मतलब फर्स्ट 2 सेमेस्टर में तुमने अच्छे से प्रिपेयर किया है अपने प्लेसमेंट के लिए धीरे धीरे से, और एकेडमिक में भी अच्छा मेंटेन रखा है। अब तुम थर्ड सेमेस्टर में प्लेसमेंट सीजन स्टार्ट होगा, तुम्हारा मास्टर्स हो तो तुम थोड़ा मतलब ज्यादा फोकस कर सकते हो, तुम्हें अब सीजीपीए से कोई मतलब नहीं है, ओके। तो ऐसे मैनेज करना है। और बाकी तो तुम कितना और आप मैनेज कर पा रहे हो स्टडी में, कैसे तुम मतलब एग्जाम पास करते हो, वो सबका थोड़ा अलग अलग होता है। बट मैनेज हो जाता है अगर तुम अच्छे से पढ़ रहे हो चीजें तो, ओके। और क्लास में तुम अच्छे से अटेंड कर रहे हो तो तुम्हें कोई भी चीजें मतलब लोड लेने का जरूरत नहीं। एग्जाम से पहले आप पढ़ लो, ओके। अगर तुम एनआईटी आईआईटी में एनरोल कर रहे हो, मतलब अगर तुम वहां जाओगे तो वहां तो आप देखो डेली एग्जाम होता है, तो पढ़ने की आदत तो वैसे भी लग जाती है, ओके। या तो तुम बिल्कुल नहीं पढ़ोगे, आप मतलब पढ़ते रहोगे, हो जाएगा, ओके। ऐसा सीन रहता है। Okay. ओके, एनीवन एल्स लाइक? अभी आ रहे हैं ये लोग, मतलब उनको टाइमिंग नाम की कोई चीज ही नहीं है, तो क्या करें, दुनिया है। हेलो। या हु इज दिस? हाँ या प्लीज टेल मी सुभाजित। दा- दादा, मशीन लर्निंग सीखने के लिए कंप्यूटर लैंग्वेज कोई जानना जरूरी है? तो ये देखो यार, मशीन लर्निंग का नॉलेज रखने वाले बंदे को तो कंप्यूटर की सारी चीजें आनी चाहिए ना, वरना मशीन लर्निंग का तुम अकेले क्या करोगे? जैसे स्टैटिस्टिक्स आपको काफी अच्छी आनी चाहिए, पाइथन आनी चाहिए, वरना मशीन लर्निंग का करोगे क्या तुम, ओके। आपकी मैथमेटिक्स अच्छी होनी चाहिए, स्टैटिस्टिक्स अच्छी होनी चाहिए, लाइक सारे आपको प्रोग्रामिंग स्टेप्स आने चाहिए, ओके। देन ओनली द मशीन लर्निंग आपका है, वरना कुछ फायदा नहीं उसका। ऐसे में नहीं है, मतलब थ्योरेटिकली आप पढ़ लिए मशीन लर्निंग, लाइक व्हाट इज द लीनियर रिग्रेशन, व्हाट इज द एसवीएम, व्हाट इज द सपोर्ट वेक्टर, लाइक, तो इससे कुछ फायदा नहीं है, आपको चीजें आनी चाहिए अच्छे से, ओके। अगर आपने मतलब पाइथन आता है, एसक्यूएल आता है, और देन आप मतलब तुम मशीन लर्निंग पे जा सकते हो, ओके, ताकि तुम्हें समझ आएगा चीजें कैसे काम करती है, ओके। ओके दादा। हेलो। या राजेंद्र दास। हेलो उदित उदित भैया, मैं राजेंद्र। हाँ हाँ, बोलो। हाँ, मैंने आपको लिंक्डइन में भी कनेक्ट किया था। ओके हाँ, वो मेरे, हाँ, मेरा वो जो परसेंटेज का वो मैटर है ना, मैंने आपको बताया था कि मेरे 12th में लाइक 55 समथिंग परसेंटेज ओके है। ओके तो ओके मैं या प्लेसमेंट, हाँ हाँ, ओके प्लेसमेंट के ओके, लिए लेट मी मैं टेल यू। कितना। हाँ। ओके, लेट मी टेल यू। लाइक जैसे 10th 12th का देखो, बहुत कम कंपनी आती है जो परसेंटेज रखती है, ओके। मैं सबके लिए बता रहा हूँ, अगर आपके अच्छे हैं तो अच्छी बात है, एंड मतलब और अच्छे है तो अच्छी बात है, ओके। परसेंटेज का ऐसा है, बहुत सी कम कंपनी आपको जज करेगी 10th 12th पे। बट हाँ, 60% आपके मिनिमम है तो आप ऑल कंपनीज में एलिजिबल हो, कुछ एक दो कंपनी छूटेगी। अगर आपके 55 है तो ये कह सकते हो आपको कुछ कंपनीज का लॉस होगा। बट अगर आपका जैसे प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर है, इफ यू आर फ्रॉम, जैसे तुम अगर ऑफ कैंपस जा रहे हो तो कोई जज नहीं कर रहा तुम्हें, अगर तुम कैंपस प्लेसमेंट में हो तो तुम अपने प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर से बात करके, अगर तुम अच्छे प्रिपेयर्ड हो, देन मतलब एक्सेप्शनल के तौर पे तुम अप्लाई कर सकते हो। वो सब डिपेंड्स ऑन प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर, ओके। ओके ओके भैया। हम्म। बाकी इतना कोई लोड नहीं लेना है कि यार मेरे 10th 12th में नहीं बने, अब मैं क्या करूँ। अब तुम क्या कर सकते हो, यू शुड फोकस ऑन दैट ओनली। तुम अब क्या कर सकते हो, उस पे ध्यान होना जी चाहिए। जी। लाइफ में ओके, जो थैंक पीछे यू रह भाई। गया वो हो गया, ओके। या एनीवन एल्स, या वी कैन कंक्लूड अवर सेशन। Who is this? Like, yeah, can you ask like one sec? साक्षी पाल, लाइक डाटा एनालिस्ट में पढ़ना है तो फिर कब एमएल, यू आर आस्किंग एमआई और एमएल? आई थिंक एमएल। सो लाइक एमएल तो आप मतलब जैसे सब आपका हो गया है ऑलरेडी, लाइक पाइथन एसक्यूएल्स, आपकी बिजनेस अंडरस्टैंडिंग हो गई है, लाइक थोड़ा एस्टिमेट पजल्स कर गया, देन आप एमएल के लिए स्टार्ट कर दो, ओके। इफ यू डोंट नो ऑल लाइक पाइथन नहीं जानते हो या कुछ आपको पता नहीं है तो आप एमएल पे मत जाओ शुरू में। बट एनालिस्ट के लिए भी प्रिपेयर करो तो आई शुड सजेस्ट कि यार तुम्हें एमएल आनी चाहिए, ओके। तो तुम सबसे लास्ट में इसको स्टार्ट कर सकते हो। एमएल बहुत कम पूछेंगे आपका, अगर प्रोजेक्ट आपने किया होगा एमएल पे, देन दे विल आस्क, ओके, लाइक बेसिक थिंग्स ओनली फॉर द एनालिस्ट। कैन एनीवन हैव एनी अदर डाउट? या वो मास्क? Do you have any idea about the MSc courses at Triple IT Lucknow? लाइक हाँ, वहाँ पे लाइक यू आर आस्किंग अबाउट द एआई, राइट? एआई एंड इन मशीन लर्निंग एंड डाटा साइंस, Yeah, राइट? both.
Yeah. लाइक आइडिया तो, और मैं ऐसे बोलूंगा दे आर गुड, लाइक मतलब आइडिया, मतलब अगर टीचर अच्छे भी, देखो टीचर थोड़ा अच्छा नहीं पढ़ाते हैं कोई भी कॉलेज में, ठीक है, हमें खुद से ही पढ़ना होता है। तो अगर आपकी डिग्री अच्छे कॉलेज से जा रही है, अगर डाटा साइंस में जा रही है, तो डेफिनेटली अगर कैंपस तुम्हें अगर अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रहा है तो वो तो सबसे अच्छी बात है। इवन अगर वो नहीं दे पा रहा है या तुम नहीं ले पा रहे हो, देन यू कैन मूव, लाइक ऑफ कैंपस तुम्हें हेल्प मिलेगा। अगर तुम एक जो पीपल है मैथमेटिक्स में मास्टर किया है, वो तुम डाटा साइंस में किया हो, तो डेफिनेटली यार तुम्हें ज्यादा वैरायटी मिलेगी, लाइक रिज्यूमे शॉर्ट लिस्टिंग में। और देन तुम्हारे डिपेंड करता है तुम्हें कितना गट्स है, लाइक कितना स्किल है तुम्हें, ओके। डिग्री मैटर करती है बट एक लिमिटेड टाइम के लिए और एक लिमिटेड मतलब स्टेप तक ही, ओके। उसके बाद हमें खुद को सब कुछ करना होता है, ये ध्यान रखना, ओके। Okay. तो लाइक जो मतलब कुछ, अगर मैं भी यहाँ पे हो जिनको आईआईटी या कुछ अच्छी कॉलेज नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि आपका लाइफ में मतलब सब कुछ ऐसा खराब हो गया है। देखो यार, इन ज्यादा से ज्यादा वर्ष क्या होगा, तुमने अगर सब कुछ अच्छे से पढ़ा है तो तुम्हारी 4 LP 5 LP की जॉब लगेगी स्टार्टिंग में, अगर टेक कंपनी में रहना है। तो इवन बाद में तुम अगर स्विच करोगे, एक्सपीरियंस के साथ करोगे, तो डेफिनेटली यार तुम्हें सक्सेस मिलेगी आगे भी। बहुत से लोग करते हैं, सारे कॉलेज तो, सारे बंदे तो आईआईटी एनआईटी से बैठे नहीं है, बहुत से लोग लोकल कॉलेजेस से। तो अगर आप मतलब कोई है ऐसा बंदा जिसको ऐसा लगता है मैं आईआईटी एनआईटी से नहीं हूँ तो मेरा प्लेसमेंट नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है, बट आपको थोड़ा ज्यादा एफर्ट करना है, ये बात है, ओके। क्या हो? तो फिर हम ट्रिपल आईटी को एनआईटी त्रिची एनआईटी वारंगल के ऊपर कर सकते हैं क्या? नहीं, ऐसे तो मैं डायरेक्ट नहीं तुम्हें नहीं बता सकता। व्हाट इज योर रैंक? 1005 ओबीसी। फ्रॉम ओबीसी कैटेगरी, ओके। देखो यार, या ओबीसी कैटेगरी में लाइक तुम्हारे पास, देखो एनआईटी वारंगल इज नॉट इन योर ऑप्शन, ओके। तो लाइक यू कैन टेक्स्ट मी, ओके, आई विल सजेस्ट। मतलब नंबर हो तो ग्रुप से ले लेना और मुझे टेक्स्ट करना तुम्हारी चॉइस क्या क्या आ रही है, ओके, आई विल सजेस्ट, ओके, नो ओके। प्रॉब्लम। Okay, I think we can conclude. Warangal. Yeah, I will say like yes, Warangal तुम applied ले सकते हो यार, इलाहाबाद कंप्यूटिंग के कंपेयर में, okay. Go for Warangal. You will not regret, okay. Yeah, you can get the in EWS 7674. There is chances, okay. I can't say that you will get, but there is some chances. Who is Anik Gupta? What timing? Hello, Anik. Hello. Yeah, yeah, yeah. Ask who raised your hand. Uh, I wanted to ask, do in this data analytics field or data scientist field, do Yeah, I didn't get it. uh, Yeah, okay. Can you repeat your question? yes, in this field, data field, do math and computing students get preference over pure math students? Between these two? No, I still didn't get it. Can you speak little louder? Uh, I just wanted to ask, in this data role, Okay. do mathematics and computing students get preference over pure math students? Yeah, of In, course. Like if you have like, yeah, for the analyst itself, like if you have the computing stuffs and with mathematics, definitely you will be the one of the top preference. Even the from the compared to BTech, like BTech biotech, BTech mechanical, BTech chemical, you will be the top priority. Okay. If you are having the mathematics and computing with both the courses you have, okay, you will be the top priority after the BTech CSC, MTech CSC, triple EC, okay, you will be the fourth, okay, okay, directly. okay, So if you like, मैं नहीं कह रहा हूँ जिसने मैथमेटिक्स से किया उनको प्रेफरेंस नहीं मिलेगी, दे आल्सो लाइक गेट सम लॉट्स ऑफ चांसेस, लाइक क्योंकि उनकी मैथमेटिक्स ज्यादा काम आती है, जैसे स्टैटिक्स हो गया, तो ये मशीन लर्निंग हो गया, ये सब मैथमेटिक्स के ही रूप है, ओके। पूरा मशीन okay, लर्निंग right. स्टैटिक्स पे ही है, तो डेफिनेटली अगर मतलब वो रोल पे डिपेंड करेगा, उनको कोडिंग स्टेप ज्यादा चाहिए या फिर मैथमेटिक्स लॉजिकल पावर ज्यादा चाहिए। तो बट हाँ, चांसेस थोड़े कम रहेंगे बट रहते हैं, बहुत से चांसेस रहते हैं एनालिस्ट में। अगर सॉफ्टवेयर में जाओगे मैथमेटिक्स होके तो थोड़ा टफ रहता है, हार्ड है, Okay. Thank you. ओके। या सो, या भाई, कैन यू टेल मी अबाउट द एनआईटी राउरकेला न्यू कोर्स? सो यार, ऐसा है लाइक तुम्हें कौन कौन सी प्रेफरेंस मिलती है उस पर थोड़ा डिपेंड करेगा, तुम मुझे टेक्स्ट करो, मैं बता दूंगा फ्री, ओके, ओके।
ऐसे बताना थोड़ा हार्ड होगा, अभी मैं तुम्हें बता दूंगा, तुमने अगर फॉलो कर लिया तो मुश्किल हो जाएगी मेरे लिए। ओके। सो गाइज मैं तुमसे अब रिक्वेस्ट करूंगा, एक तो मैं इसको सेशन को कंक्लूड करूँ, क्या तुम्हें लाइक अपने फ्रेंड्स में तुम अगर एनालिस्ट का अगर तुम्हारा मेरा कंटेंट तुम्हें थोड़ा भी सही लग रहा है, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि तुम अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर करो। कुछ अगर मैं इंटरव्यू अगर ले रहा हूँ तो उसको आप स्टेटस के थ्रू या जैसे भी आप जैसे भी कर सकते हो उसको थोड़ा शेयर करो, ताकि मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिले। अगर मैं न्यू लोगों के पास पहुंच नहीं पाऊंगा तो मेरा कंटेंट चाहे कितना भी अच्छा हो तो उसका कोई वैल्यू नहीं। ओके, अगर मैं ऑडियंस तक नहीं पहुंच पा रहा हूँ तो। ओके। और ये चीज ध्यान रखो, और मेरे लिए मतलब ऐसा नहीं है कि मैं सारी चीज पैसों में ही करूंगा। मेरे लिए अभी पैसा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर मैं मतलब 10 लोगों की भी हेल्प कर पा रहा हूँ तो मेरे लिए काफी सुकून वाला काम रहेगा। बट इस